लास्ट क्लास में हम लोग का सिंपल डेटा विजुअलाइजेशन शायद कंप्लीट हो गया था। हिस्टोग्राम प्लॉट, विस्कर प्लॉट, ये स्कैटर प्लॉट भी हो गया था। ठीक है, तो सारे के सारे ये जो प्लॉट्स कर रहे थे वो हो गए थे। आज हम लोग देखेंगे रैंडम नंबर्स। साउंड आ रही है नहीं? ठीक है, हो गया। तो स्कैटर प्लॉट आज हमारा है 16, 17 डेट। रैंडम नंबर्स is a big part of machine learning. Data in learning algorithms that map input data to output data in order to make predictions. In order to understand the need of statistical methods in machine learning, you must understand the source of randomness in machine learning. The source of randomness in machine learning is a mathematical trick called pseudo-random number generator. In this video, you will discover pseudo-random number generator and when the control for randomness is machine learning. In machine learning, after complete the tutorial, you will know sources of randomness in applied machine learning with focus algorithms, and what a pseudo-random number generator is, how to use them in Python, when to control the sequence of random numbers, and when to control for randomness. Let's get started. So 7 parts they are: randomness in machine learning, pseudo number generator, random numbers with Python, random numbers with NumPy, when it sees the random number generator, how to control the randomness, common question, randomness in machine learning. So ठीक है, तो use as tool to help learning algorithms be more robust and ultimately results in better predictions and more accurate model. Let's look at a few sources of randomness. Randomness in data. There is a random element sample of data that we have collected from the domain that we will obtain, evaluate method. The data may mistakes or errors. More deeply, the data contains noise that can obscure the crystal clear relation between the inputs and the outputs. Randomness in evaluation. We do not have access to all the observations from the domain. We work with only a small sample of data. Therefore, we harness randomness when evaluating a model, such as using K4 cross-validation to fit and evaluate the model on different subsets of the available dataset. We do this to see how the model works on average rather than on a specific set of data. Randomness in algorithms. Machine learning algorithms use randomness when learning from sample of data. This is a feature where the randomness allows the algorithm to achieve a better performing mapping of the data than if the randomness was not used. Randomness is a feature which allows an algorithm to attempt to avoid overfitting the small training set and analyze
to the broader problem. Algorithms that use randomness are often called stochastic algorithms rather than the random algorithm. This is because although randomness is used, the resulting model is limited to a more narrow range, like limited randomness. Some clear examples of randomness used in machine learning algorithms include the shuffling of training data prior to each training epoch in stochastic gradient descent, the randomness subset of the input feature clues upon the random forest with the random initial artificial neural network. We can see that there are both sources of randomness that we must control for each has noise in the data, and sources of randomness that we have some control over, such as algorithm evaluation and the algorithms themselves. Next, let's look at the source of randomness that we use in the algorithm and programs. We can see that there are both sources of randomness that we must control for, such as noise in data, and sources of randomness that we have some control over, such as algorithm evaluation and the algorithm themselves. Next, let's look at the source of randomness that we use in pseudo number generators. The source of randomness that we inject into a programs and algorithms is a mathematical trick called pseudo number random number. A random number generator is a system that generates random numbers from a true source of randomness in physical, such as Geiger counter, where the results are turned into a random number book. The form of physical source that you can purchase, for example, a million random digital digits with 1 lakh normal deviates. We do not need true randomness in machine learning. Instead, we can use pseudo randomness. Pseudo randomness is a sample of number that look close to random, but were generated using a deterministic process. Shuffling data and initializing coefficients with random values uses pseudo-random number generator. These little programs are often a function that you can call that will return a random number. Called again, they will return a new random number. Wrapper functions are often also available and allow you to get your randomness as an integer floating point within a specific distribution, within a specific range, and so on. The number are generated in a sequence. The sequence is associated with the initial number. If you do not explicitly seed the pseudo-random number generator, then it may use the current system time in seconds or milliseconds as seed. The value of the seed does not matter. Choose anything which you wish. What does matter is that the same important module called random that offers seed of the function
Python uses a popular and robust pseudo random number generator called the Massarin tester. In this section, we will look at the number of use cases for using seed. The random number generator. The seed numbers random number generator is a mathematical function that generates a sequence of nearly random numbers. It takes a parameter to start off sequence called the seed. The function is deterministic, meaning given the same seed, it will produce the same sequence of number every time. The choice of seed does not matter. The seed function will seed the pseudo-random number generator, taking an integer value as an argument, such as 1 or 7. The seed function is not called prior to using randomness. The default is to use the current system time in milliseconds from epoch 1970. The example below demonstrates seeding pseudo-random number generators. And so that's the seeding generator result there. ये हो गया हमारा pseudo random number generator. बस फिर से रन करो. 1 1 3 4 2 1 2 2. Another example, seeds. The pseudo random number generated with the value 1 generates 3 random numbers. Resets the generator and so that the same 3 random numbers are generated once. It can be useful to control the randomness by setting the seed to ensure that your code produces the same result each time, such as in a production model for running experiments, where randomization is used to control the confounding variables. A different seed may be used for each experimental run. Random floating point values चाहिए. Floating random float
floating point values can be generated using random function. Values will be generated in the range between 0 and 1. Specifically, in the interval 0, 1, values are drawn from a uniform distribution, meaning each value has an equal chance of being drawn. The example below generates 10 random floating point values. Okay. अब ये भी तो कर सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रिंट कर दो रैंडम नंबर्स को. Where minimum and maximum are minimum and maximum values of the desired range respectively, and value in the randomly generated floating point value in the range between 0 and 1. Water level complete. Hello guys, I'm back. ठीक है, तो हम ये कर लिए. फिर रैंडम इंटीजर वैल्यूज. Random integer values can be generated with random integer, R-A-N-D-I-N-T. Random integer value dot py. This function takes two arguments, the start and the end of the range for the generated integer value. Random integers are generated within and including the start and the end of the range value. Specifically, in the invert interval start and random values are drawn from a uniform distribution. The example below generates 10 random integers values between 0 to 10. Okay, now we are going to generate 10 random integers value.
Generate random integer values from random import seed, from random import gradient seed, the random number generator. Now seed1 hashtag generate some integer, अब for space in range 10. अब चाहे तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ रैंडम को 0 to 10. रैंडम गॉसियन वैल्यूज जनरेट करते हैं. रैंडम इस बार गॉसियन value dot py. Oh my gosh, got me. Floating random floating point values can be drawn from a Gaussian distribution using the Gauss random Gaussian value. This function takes two arguments that correspond to the parameters that control the size of the distribution, specifically the mean and the standard deviation. The example below generates 10 random values of Gaussian distribution with a mean 0.0 and a standard deviation of 1.0. Random choosing from a list. Then you could generate a random integer between 0 and 9 and use it to result an item from the list. The choice method function implements this behavior for you. Selections are made with a uniform likelihood. The example below generates a list of 20 measure.
Random samples from a list. Repeating the random selection per item from a list to create a randomly chosen object. Once an item is selected from a list and added to the subset, it should not be added again. This could self-replacement because once an item from the list is selected for the subset, it is not added back to the original list. It is not made available for reselection. This behavior is provided in sample function that selects a random sample from a list without replacement. To select a random as argument, no data items are not actually removed from the original list. ये क्या किया random I for I range 20 दिया sequence sample subset है ये subset का sample subset sequence चाहिए चार 18 2 3 Random shuffle of list. Randomness can be used to shuffle a list item, like shuffling a deck of cards. The shuffle function can be used to shuffle a list. The shuffle is performed in place when the list provided as an argument to the shuffle. Sure. Sequence is equals to यहाँ पर I for I minus 20 और अगर यहाँ पे करें sequence
जैसे ही वो रैंडम सफल कर दिया है तो 0 with NumPy. In machine learning, you are likely using libraries such as scikit-learn and CUROS. These libraries make use of NumPy and under the covers. A library that makes working with the vector and matrices of numbers very efficient. NumPy also has its own implementation of pseudo-random number generator and convenience wrapper function. NumPy also implements the miscellaneous twisted pseudo-random number generator. Let's look at a few examples of generating random number using the NumPy arrays, such here NumPy random. Splitting the Python pseudo-random does not impact the NumPy pseudo-random generator. It may be seeded. Used separately, the seed function can be used to seed NumPy. Array of random floating point value.
Can be scaled by multiplying the value by the standard deviation and adding the mean from the desired scale distribution. Scaled values. Formula कौन लिखेगा? Scaled value is equals to mean cross value plus standard deviation. Mean as well, the mean the standard deviation from the desired scale Gaussian distribution, and values the randomly generated values from a standard Gaussian distribution. Shuffle number.
solve from distributed sequence. Now that we know how controlled randomness is generated, let's look at where you can use it effectively. When to see random number generator. There are times during project modeling project when you should consider using the random number generator. Let's look at two cases. Data preparation and data splits. Data preparation may use randomness such as shuffle of the data or selection of the values. Data preparation must be consistent so that the data is always prepared in the same way during the fitting evaluation and when making preparation with the final model. Data splits. The splits of the data, such as for a train test split or K-fold cross-validation, must be made consistently. This is to ensure that each algorithm is trained and evaluated. Random number transfer before performing the batch of tasks not match with which one then going to be train exactly the same data each time. This may happen if the algorithm is used in production environment. It may also happen if you are demonstrating an algorithm in tutorial environment. In this case, it may make sense in some plan. How to control for randomness. Same data. This will result in this model with slightly different performance each time it is trained, as mentioned. We can fit the model using the same sequence of random numbers each time when evaluating a model. This is bad practice as it hides the inherent uncertainty within the model. Better approach is to evaluate the algorithm in such a way that the reported performance includes the measured uncertainty in the performance of algorithm. We can do that by repeating the evaluation of the random with the different sequence of random numbers. The differences of random numbers. See the random number data. It's a difference beginning of the evaluation that is seated with a difference either within of each evaluation. There are two aspects of uncertainty to consider here, which is data uncertainty and algorithm uncertainty. Evaluating an algorithm on multiple aspects of data will give insights into how the algorithm performs varies with changes to the strain and test data. Algorithm uncertainty. Evaluating an algorithm multiple times on the same splits of data will give insight into how two algorithms performs varies along. In general, I would recommend reporting on both of the sources of uncertainty combined. This is where the algorithms is fit on different splits of the data. Each evaluation run and has a new sequence of randomness. The evaluation procedure can see the random number generator once at the beginning and process can take 30 or more times to give a population. Model taking into account
Common questions: can I predict random numbers? You can predict the sequence of random numbers even when the deep neural network. Does not impact the device even but practical. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसको अब हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय दोस्तों। लार्ज नंबर को हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कि हमारा आज हुआ है रैंडम नंबर्स कंप्लीट। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। और दोस्तों हम लोगों ने इतने दिनों में क्या किया, ये भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एक होमली फूड नाम से ऐप मिलेगा आपको, HOMLI स्पेस FOOD, जो कि अभी इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में लॉन्च हुआ है और उस पर अभी काम किया जा रहा है। मतलब अभी किचन की ऑनबोर्डिंग है। 5 तारीख से प्रॉपर हम रनिंग वे में आ जाएंगे, रनिंग फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं मतलब थोड़ी सी हमें सपोर्ट करना, तो ज़रूर जाएं। जो इलाहाबाद से हैं उनके लिए ज़रूर जाएं और ऐप को डाउनलोड करें और 5 तारीख रिव्यू वगैरह कर देना यार, रेटिंग वगैरह कर देना, अच्छी रेटिंग कर देना प्लीज़ यार, है ना, अभी स्टार्ट है। ठीक है, और उसको मैं और मेरे सर, मतलब मेरे फिजिक्स के टीचर, ठीक है, मैं भी फिजिक्स का टीचर हूँ, वो भी फिजिक्स के टीचर थे मेरे, अब मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स। ठीक है, और कई सालों से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स वगैरह, और साथ में मेरा कंप्यूटर भी है। तो हाँ, तो मैं और मेरे सर ने मिलकर एक ऐप बनाया, ठीक है, होमली फूड, और उसको ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट करेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा मुझे। और वो जो है 5 तारीख से रनिंग फेज में पूरा आ जाएगा। अभी किचन्स की ऑनबोर्डिंग चल रही है इलाहाबाद में, और हमारा जो ऐप है वो रेस्टोरेंट को नहीं कर रहा है ऑनबोर्ड्स, वो ओनली कर रहा है होम फूड्स के लिए। मतलब देखा जाए तो हमारा जो ऐप है वो वुमेन एम्पावरिंग के लिए बोल सकते हो। वैसे हम लोग भी घर पे खाना बना करके डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वुमेन के लिए है, घर बैठे आप काम भी कर सकते हो। क्लाउड्स मतलब हम यहाँ पे सिर्फ घर का खाना प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। ठीक है, और इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी हैं, जैसे कि टिफ़िन वगैरह सब्सक्रिप्शन के, और सिर्फ हम यहाँ पे घर का खाना प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, और जहाँ पे कोई भी तरीके के रेस्टोरेंट्स को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिससे खाने की क्वालिटी वगैरह हम जब ऑनबोर्डिंग करने जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, लोगों से मिल करके ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं उनका किचन वगैरह कैसा है, किस तरीके से वो खाना बना रहे हैं। ठीक है, और रेटिंग का भी ध्यान दे रहे हैं कि जिन लोगों की रेटिंग ऑलरेडी अच्छी है उनको ही हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो अभी प्रोसीजर चालू है। तो होमली फूड नाम है, ठीक है, ऐप का, और बढ़िया है। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। जिन लोगों को लगता है कि हमें भी इलाहाबाद में है, हम स्टार्ट करना है, हमें होमली फूड में किचन एज अ किचन रजिस्टर करना है, तो उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होमली फूड का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज पे आप डायरेक्टली अभी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। और अभी और भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी एक मेरा देखो ओपन है, ठीक है, ये एक ओपन है जिसमें मैं अपना एक ऐप आज लॉन्च करने जा रहा हूँ, स्टडी प्लानर नाम से। ठीक है, अब ये पूरा लॉन्च हो जाएगा। मैं 2-3 दिन से लगा हुआ हूँ यार, इसको लॉन्च करने में पागल हो गया हूँ। कभी आइकॉन्स कुछ बता दे रहा, अभी तो आइकॉन्स वगैरह आज लगाने हैं, आज सुबह लगा रहा था, लेकिन फिर अचानक से मुझे एक मीटिंग थी। तो मीटिंग बोले तो किसकी, किचन की, क्योंकि हम लोग पहले शेड्यूल कर रहे हैं कि भाई वो कब खाली हैं। हम तो लगे ही, हमारा काम तो यही है, तो हम वो कब खाली हैं जो किचन, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो वो ऑर्डर जब किचन क्लोज होगा तभी हमें वो टाइम देंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने।
तो अभी तब यही सब काम में बिजी हैं। तो थोड़ा सा मेरा ये वाला काम जो अभी मेरा स्टडी वाला काम है, ठीक है, जैसे कि एआई मॉडल्स के, मतलब एआई मॉडल्स कह रहा हूँ, एआई एमएल की स्टडीज़ कर रहा था, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, 5 से 6 दिन का हुआ था पिछले 7 दिनों में। परसों से मैं फिर से कंटिन्यू हूँ, कल मेरा गैप हुआ था, आज मैं फिर यहाँ पे एआई एमएल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है मुझे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे पाता हूँ। उसके साथ साथ मुझे पढ़ाना भी है, इस साल मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पिछले साल तक मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, और फिज़िक्स पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, 11th-12th की फ़िज़िक्स। और उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहा हूँ पढ़ाने, और सुबह स्कूल भी ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी परसों गया था, कल नहीं गया था, नहीं कल गया था, आज नहीं गया हूँ स्कूल, ठीक है, मंडे से रेगुलर हो जाएगा। तो ये भी है, ठीक है। इन सब के साथ साथ मतलब अभी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट कौन से हैं, जैसे कि एक होमली फूड हो गया। बाकी मैंने कुछ ऐप्स और बना के रखे हैं जो बहुत दिनों से मैं, मतलब देखा जाए तो मैंने पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तो चल ही रहा है 3 महीने ये, और उधर नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिन ऐप्स पे काम किया था, जिन चीज़ों प्रोडक्ट्स पे काम किया था, एक प्रोडक्ट तो हमारा लॉन्च हो गया है, प्रॉपर रनिंग वे में है, जो कि होमली फूड्स है। स्टडी प्लानर भी कंप्लीट है, बस उसको आज लॉन्च करना है, आज या कल में लॉन्च हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद जो लॉन्च में प्रोसेस में रहेगा, उन एप्स का नाम मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, काम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, आप भी इस तरह से कुछ क्रिएटिव करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल मिलेंगे। बाय बाय।